So this next generation Ertiga is finally launched by Maruti Suzuki, and as you can see, this is next generation and very different looking from the previous one. If you look at the front grille, सबसे पहले वहाँ पर ढेर सारा metal आपको studded front grille नजर आएगा, plus new projector LED headlamps, LED in tail lamps as well. और इसका look के अलावा if you talk about dimension में भी काफ़ी changes हैं. This is 5 mm taller, but this is around 40 mm wider and 99 mm longer. But overall, if you see inside, वहाँ माहौल कैसा है, वहाँ देखते हैं. तो इंटीरियर की बात करें, यहाँ पर बैठते ही सबसे पहले यू कैन हैव अ लुक एट दिस स्टीयरिंग व्हील, जो हाल फिलहाल में मारुति सुजुकी की कई गाड़ियों में हमने देखे हैं. दिस इज़ फ्लैट बॉटम एंड नाउ लेदर का यहाँ इस्तेमाल हुआ है. लुकिंग प्रीमियम फीचर्स के हिसाब से, कंट्रोल के हिसाब से, कैन लुक एट दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम यू कैन कंट्रोल फ्रॉम हियर एंड दिस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी विच यू कैन कंट्रोल फ्रॉम दिस साइड अंडर दिस स्टीयरिंग व्हील. प्लस इंस्ट्रूमेंटेशन में आप अगर देखें, सामने डिस्प्ले है, डोर ओपन का डिस्प्ले और साथ में इग्निशन स्विच पोजीशन एट्सेट्रा ऑल दोज इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको मिल रहा है. प्लस ये एक फ्लोटिंग सा इंफोटेनमेंट सिस्टम स्क्रीन यू कैन सी विच इज़ डैश में 4 अलग अलग लेयर यू कैन सी. यहाँ डैश के अलावा जो AC vents हैं, they are basically hidden in this pattern only. बीच में wood का finish इस्तेमाल किया गया है and which is giving a premium look. यहाँ डैश में नीचे फिर से आपको light beige color देखने को मिलेगा. And then if you look at the climate control whole panel and this is there. And यहाँ एक interesting feature नया है which is chilled cup holder. You can actually switch on and off the AC vent as well. So ये आगे की सीट की कहानी थी and now we'll sit in the second row. देखते हैं वहाँ पर क्या सीन है. This new Ertiga और यहाँ if you see, यहाँ तो आपको AC vent you can't see, but यहाँ second row के लिए AC vents ऊपर आपको रूफ में दिए गए हैं. And as I said, this is wider than the previous one and otherwise nothing else to talk about here. You have some space to keep some stuff and one power point. And this is single lever which helps you slide it and recline it. And now I can enter third row. This is the third row of next gen Ertiga, where they have increased some space for third row passengers, and you have cup holders both sides. Power point, no AC vent, but the AC vent from the roof, second row roof, that will work for this seat as well. So this is the third row, and now I'll just show after opening this seat how much space you can. And now boot space, which is around 209 liters when you have all 3 rows up. और एक lever के साथ ही आप इसको fold कर सकते हैं. And if you fold all the seats, it will go beyond 800 liters, the whole space. Here you have, this is the toolbox. This is the space which you have when all 3 rows are open. So now, if you talk about other new thing in this Ertiga is the 1.5 liter engine, which is used in Ciaz also. So that petrol engine, which is more efficient, more powerful. This is what company is claiming. And you have diesel engine option as well. जो पेट्रोल की बात करें, that comes with manual and automatic transmission options. And now at the end we look at the pricing. Finally, the prices of this new Ertiga.
And we have two engine options, as I told you. One is petrol, one is diesel, and automatic option is also available for the petrol version. So for petrol manual, the prices start from 744, it goes up to 950. Petrol automatic 918 to 9,95,000, or if I remember correctly, it's around 70,000 more than the previous version's petrol entry price. So these are introductory price what Maruti Suzuki is telling us. और यहाँ मुझे पिछला वर्जन का याद आ रहा है, अराउंड 6.7 or something जो एक शोरूम प्राइस था for the base variant. So this is around 60-70,000 more than the previous version as far as petrol version is concerned. Diesel manual options, it starts from 8,84,000 and goes up till 10,90,000. So after this whole technical and feature-wise presentation of this next gen Ertiga,